Hello friends, welcome to Balkishar Premier Academy, one of the most pioneer institute for GATE, IES and PSU examination. Hello friends, in this video we are going to discuss about flat band voltage. So what is flat band voltage? वो वाले चीज को हम लोग देखने वाले हैं. So now, as we know, suppose this is a p-type semiconductor. In the p-type semiconductor, in the gate voltage, we have applied a positive voltage. In the substrate, we have applied a negative voltage. That means we can say right now that our gate voltage is positive voltage. So since the gate voltage is positive and the substrate terminal is negative, so we can say the substrate terminal or the body terminal is negative voltage. So we can say that the holes will move away from the interface. Oxide semiconductor interface से holes move away हो जाएंगे. They will move away from the oxide semiconductor interface due to this potential applied at the gate and the substrate. So इंटरफेस रीजन पे क्या रह जाएगा? इंटरफेस रीजन पे जो रहेंगे वो होगा आपका नेगेटिव चार्जेस, दैट इज द एक्सेप्टर आयंस. So there will be layer of acceptor ions created, and we know this layer of acceptor ions that has been created is nothing but the depletion layer. So this is the depletion layer that has been created due to the application of positive gate voltage. So as we increase this gate voltage, this depletion layer will increase, and at when the VG voltage will be equals to the threshold voltage, then the value of the depletion layer width, that is the XD will attain a maximum value of XD max. So इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा आपका depletion width नहीं हो पाएंगे. So this is the maximum value of XD max and we have seen the value of XD max. नाउ ये जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ है, इसकी बदौलत क्या होगा कि इंटरफेस रीजियन में, ये जो इंटरफेस रीजियन है, ये इंटरफेस रीजियन में हमने देखा कि बैंड बेंडिंग हो रहा था. सो बैंड वाज बेंडिंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव गेट बायस. सो नाउ फ्लैट बैंड वोल्टेज का मतलब होता है कि ये उस गेट वोल्टेज के बारे में बोलते हैं such that there is no band bending. तो ये वाला वोल्टेज मैंने पॉजिटिव वोल्टेज गेट के डालने के बाद यहाँ पे बेंडिंग हुआ है. तो इस मोमेंट पे हाउ अमाउंट ऑफ वोल्टेज शुड बी गिवन टू द गेट सो दैट there will be no band bending in the semiconductor. That means there will be no space charge region or depletion region. So we can define that the flat band voltage जो होते हैं वो flat band voltage को VFB बोला जाता है. So VFB is defined by the gate voltage so VFB is the gate voltage such that there will be no band bending, there will be no band bending in the semiconductor. सेमीकंडक्टर के अंदर कोई बैंड बेंडिंग नहीं होगा. सो दिस विल बी द VFB. नाउ अगर कोई बैंड बेंडिंग नहीं होगा, इसका मतलब देयर विल बी नो डिप्लीशन लेयर, कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होंगे और स्पेस चार्ज लेयर. That means the flat band voltage is the external gate voltage required at the MOSFET to eliminate the bending of bands. That means गेट वोल्टेज पे मुझे एक्सटर्नली कुछ वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी बदौलत मेरा ये जो बैंड बेंडिंग हुआ है इसको मैं रिमूव कर सकूं.
जिस जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नली, जिसके बदौलत ये बैंड बेंडिंग रिमूव होंगे, इट्स कॉल्ड द फ्लैट बैंड वोल्टेज। एंड दिस फ्लैट बैंड वोल्टेज VFB is generally denoted by the metal semiconductor work function difference minus the QOX plus COX by COX. So this will give us the flat band voltage VFB in volts. Now, what is this phi ms? Phi ms was the, if you remember, we have already discussed, phi ms was the metal semiconductor work function difference, that is phi m minus phi s, and COX is the oxide capacitance. So oxide capacitance per unit area. That means it must be written as epsilon OX divided by TOX. What is TOX? TOX is the width of the oxide layer, and epsilon OX is the permittivity of the oxide layer. So now we have got इसका derivation है, so you do not need this derivation, just आपको ये formula चाहिए to do the numericals in the GATE examination. Now what is this QOX? So QOX का मतलब होता है it is the charge. So if we define the QOX, Q यहाँ पे QOX है, that means ऑक्साइड के अंदर जो कैपेसिटेंस, ऑक्साइड के अंदर जो चार्जेस होंगे. So this QOX is defined by QSS dashed into the modulus of Q. So this is the magnitude of charge and this is the trapped charge located at the oxide semiconductor interface. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि if suppose this is the metal, ये मेरा oxide और this is the semiconductor. Now suppose if we want to draw the charge distribution, so charge distribution draw करने के लिए, तो suppose यहाँ पे मैंने metal लिखा, ये oxide, ये वाला semiconductor. Now we know that when we apply a positive gate voltage to the P substrate MOSFET, what will happen? There will be a depletion layer in the interface, and within this depletion layer there will be charges like this. So it will be full of charges. That means यहाँ पे मैंने गेट था, मेटल पे मेरा गेट टर्मिनल था और गेट टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज डाला है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट टर्मिनल था और इस सबस्ट्रेट टर्मिनल पे हमने नेगेटिव वोल्टेज डाला हुआ है. सो ये पॉजिटिव वोल्टेज के लिए क्या होगा कि मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव वोल्टेज का लेयर क्रिएट होंगे. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज का लेयर क्रिएट होगा लाइक दिस. सो दिस इज द पॉजिटिव वोल्टेज लेयर, और यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन के अंदर एक नेगेटिव चार्जेस का लेयर क्रिएट होंगे. सो दिस वाज द XD max. बट इन द आइडियल केस वी हैव एज्यूम्ड दैट आइडियल केस में ऑक्साइड के अंदर कोई ट्रैप चार्जेस नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली देयर विल बी सम ट्रैप चार्जेस. सो दिस विल बी द ट्रैप चार्जेस इनसाइड द ऑक्साइड लेयर, एंड दिस इज डिनोटेड, इसी को डिनोट किया जाता है QSS dash. So QSS dash is the trapped charges per unit area inside the oxide layer, and this one is the depletion layer, that is the depletion layer का charges maximum when the XD max will be maximum. So इसको मैं mod डाल देता हूँ negative charges है, और this is the charges inside on the metal layer, मेटल के ऊपर जो चार्जेस है. सो ये वाले चार्ज के बाद मैं बोल रहा हूँ QSS. सो वी कैन से दैट इन द ऑक्साइड देयर विल बी सम चार्जेस. सो QOX, सो यहाँ पे QOX था, यहाँ पे QOX. सो दैट QOX is generally the trapped charge
or the trapped charges, total charges inside the oxide. So inside the oxide we know there will be QSS dash. Dash means per unit area into the Q mod. So this Q is the electronic, this is the electronic charge that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and this one is the trapped charge. So trapped charge located कहाँ पे है? So trapped charge located at oxide semiconductor interface. So oxide semiconductor interface पे ये charge है. So we'll use this formula of QX to find the value of trapped charge inside the oxide layer. So in this way we can calculate the value of VFD. तो 5 ms तो मैंने देख लिया कि ये फंक्शन डिफरेंस होते हैं मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में, और QOX जो होता है अभी देखा, और COX is the oxide capacitance per unit area. So in this way we can calculate the flat band voltage. So now ये flat band voltage हो गया. So now let us see what will be the capacitance delivered by the MOS capacitor. अभी तक हमने देखा कि कैपेसिटेंस जो MOS कैपेसिटर्स जो होते हैं, that MOS capacitors behaves as a parallel plate capacitor. So if they behaves as a parallel plate capacitor, then how much capacitance value they will provide during their operation? That means in the accumulation mode, in the depletion mode, and in the inversion mode of operation. So for that let us take an example that let us take. So now our topic will be the capacitance. Our topic will be capacitance inside MOSFET. तो MOSFET के अंदर क्या कैपेसिटेंस होंगे? So this will be the topic right now. Let us take the topic. So MOSFET के बारे में जब भी मैं डिस्कस करूंगा तो we know that the MOSFET will have three region of operation. First one is the accumulation, second one is the depletion, and the third one is the inversion. So if we talk about the accumulation, so let us talk about the accumulation mode of operation. Accumulation mode of operation. So if we talk about the accumulation mode of operation, then what will happen? So at first let us draw a MOS capacitor. So let us draw a MOS capacitor with P substrate. So this will be the basic block diagram of a MOS capacitor using a P substrate. So this is the metal layer, this will be the oxide layer, and this is the P substrate. This is the gate terminal and this is the body terminal. So ये मेरा गेट है, ये मेरा बॉडी है, और इसके ऊपर मेरा मेटल ऑक्साइड, and this is semiconductor, and we have assumed P type of semiconductor. This is a MOS capacitor using P type of substrate. So now if we apply, so for accumulation mode of operation, what do we need to do? We have to apply a negative potential at the gate and the body पे पॉजिटिव पोटेंशियल डालने होंगे. सो नेगेटिव पोटेंशियल जैसे ही गेट पे डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होगा like this. So negative charges will be created here, and due to which a electric field will be created in this direction. So this is the induced electric field inside the MOSFET. So due to which there are some P substrate. So P substrate के अंदर बहुत सारे majority carriers होना चाहिए. That majority carriers will move in the direction to the electric field, and they will accumulate at the interface region of semiconductor and oxide like this. So in this way the holes will accumulate
at the interface region. So ये जो interface region पे holes accumulate हुआ है, due to which the interface region पे आपका hole का जो concentration होंगे, that concentration will be big. So it will be a big concentration of holes at the interface. तो ये वाले region पे, ये वाले interface region पे मेरा hole concentration इंक्रीज कर देंगे. अगर होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम अ हाईली पी टाइप मटेरियल. तो ये हाईली पी टाइप मटेरियल हो जाएंगे. सो नाउ इफ वी think about the charge distribution inside this MOSFET, so let us draw the charge distribution. So suppose this is the metal layer and this is the oxide layer. So मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने वाला हूँ. सो इफ वी ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मेरा मेटल होगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर, ऑक्साइड, यहाँ पे सेमीकंडक्टर. सो यहाँ पे मेटल, ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर होंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, हमने देखा कि एट द इंटरफेस रीजन पे होल्स एक्यूमुलेट हो रहा है एंड दीज होल्स आर नथिंग बट द positive charge needed for the capacitance operation. So we will get a positive charge. So we'll get a positive charge at the interface region like this. So this is the positive charge that we will get just at the interface of the oxide and semiconductor. Similarly, since we have given a gate negative potential, तो यहाँ पे negative charges आएंगे. So we will say that there will be same amount of negative charges on the metal plate. In this way, we can say that right now this is the positive charge that has been accumulated at the oxide semiconductor interface, and this is the negative charge that is grown on the metal plate. And this charge, ये जो charge है, ये वाले charge को बोला जाएगा. So let us say this charge as Q. And if we talk about the charge per unit area, so we'll give a Q dash. So Q dash is the charge concentration per unit area. And similarly, यहाँ पे भी आपको same amount of charge मिल जाएंगे, that is Q dash negative. यहाँ पे positive charges, negative charges. Now if we increase the voltage Vg, so now if we increase the voltage Vg, अगर Vg को अभी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कंटेंट चेंज होगा, यहाँ पे भी चार्ज कंटेंट चेंज होगा. सो ये जो वोल्टेज के साथ चार्ज कंटेंट चेंज हो रहा है, इसी से आपको कैपेसिटेंस मिल जाएंगे. सो वोल्टेज चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट voltage will give the capacitance value. So we can say that, let us say that we have changed a small value of Vg. स्मॉल वैल्यू ऑफ Vg मतलब सपोज dVg हमने चेंज किया वोल्टेज को, तो dVg चेंज करने से और इंक्रीज किया, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेट वोल्टेज इंक्रीज किए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फिर से एक्यूमुलेट होंगे, तो इसको मैं सपोज बोलूंगा dq डैश. सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, जिसको मैं बोलूंगा माइनस डी क्यू डैश. तो वोल्टेज चेंज के साथ जो मेरा चार्ज क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इसी से मुझे अभी कैपेसिटेंस मिल जाएंगे. सो वी कैन से that small change in the applied voltage will induce a small change in the charge density on the metal and the oxide interface. So we can say that small change in the gate voltage, small change in gate voltage Vg will also will also induce small change in the charge density, small change in the charge density on the metal layer as well as on the
ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस, ये दोनों जगह पे आपका डेंसिटी ऑफ चार्ज चेंज होंगे। सो नाउ द कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया क्या होगा एट दिस स्टेट? सो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया is equals to, we can say that it is nothing but the, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बीच में डाइलेक्ट्रिक, सो ऑक्साइड कैपेसिटेंस. So we can say it is nothing but the oxide capacitance, and oxide capacitance is denoted by COX. So we can say it will be epsilon OX divided by EOX, because we are getting the capacitance per unit area. So A से divide कर दिया मैंने. So now so this is the value of the capacitance. So we can say this is the value of the capacitance in the accumulation mode of operation. So accumulation mode of operation पे मेरा जो capacitance होंगे, that will be C of accumulation is nothing but the oxide capacitance. Nothing but the oxide capacitance. So this is the main thing. So at accumulation कौन सा capacitance काम करता है? Oxide capacitance काम करता है. तो ये हुआ मेरा accumulation mode पे जो capacitance का value. Now let us see the depletion mode पे मेरा capacitance का value क्या होगा. So for that let us move to the depletion region. So depletion mode of operation. So in the depletion mode of operation, what will happen? So in the depletion mode of operation, what first let us see the block diagram of the MOS capacitor. So if we draw the block diagram, so it will look like this. यहाँ पे मेरा metal layer, यहाँ पे oxide layer, and यहाँ पे मेरा हो जाएंगे दो terminals. So let us say this will be the gate terminal, this is the metal layer, this is the oxide layer, and this is semiconductor. So we will assume the p-type semiconductor. So p-type substrate MOS capacitor is there, and this is the body terminal. So now for depletion mode of operation, what do we need to do? For depletion mode of operation, we know that the gate potential must be given a positive potential, और बॉडी पोटेंशियल को मुझे देना है नेगेटिव पोटेंशियल. जैसे ये देंगे तो गेट के मेटल प्लेट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो अब मेटल प्लेट के ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज आएंगे. सो पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो मेटल प्लेट के से इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द बॉडी देयर विल बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. सो विल गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. So this is the electric field that has been induced. So this is the induced electric field, and due to this induced electric field, what will happen? The holes, these are the holes, that is the majority carriers. These holes will move away from the interface. We have already seen that. So if they move away from the interface, so at the interface region पे क्या होगा? Interface region पे we will get negative acceptor ions like this. So we'll get the negative acceptor ions at the interface of oxide and semiconductor. So these are the negative acceptor ions. So we'll get a depletion layer. So एक depletion layer create हो जाएंगे XD. So this is the depletion mode of operation. So this XD जो है ये XD आपका depletion layer create होगा. So that means if we want to draw the charge content right now, so let us say that this is the metal and this is the oxide, okay, and we are going to draw the charge distribution. So if we want to go for the charge distribution, so let us say this is metal, oxide, and this is semiconductor. So we have assumed as a p-type semiconductor. Now in the p-type semiconductor, what will happen?
Right now we have seen the negative charges has been developed here is inside the depletion region. These are immobile charges. So inside this depletion layer there will be a accumulation of negative charges like this. So this is the negative charge that has been accumulated at the oxide semiconductor interface. Now, so let us say that this is the amount of charge kitna hai iska. This is the q dash minus q dash since it is negative charge minus q dash. Similarly, positive charge will also be developed inside on the metal plate. So metal plate के ऊपर एक positive charge develop होंगे. So this is the positive charge that we are talking about on the metal plate. So ये वाले charge को हम लोग बोल सकते हैं this is the q dash. तो यहाँ पे q dash प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे q dash negative q dash प्रोड्यूस हुआ है. So now what will be the capacitance? So if we change the voltage Vg by a small amount, there will be a small change in the q dash. Similarly, there will be small change in the minus q dash also. So we can say that small positive voltage applied to the gate terminal, that if there is a small change in the gate terminal, so small change in positive voltage gate terminal, positive voltage Vg will induce change in the charge content, change in charge content में change होंगे. Okay, so it will give some capacitance. Voltage के साथ अगर charge content change होता है तो capacitance तो जरूर रहेंगे. So what will be the total capacitance? So if we say what will be the capacitance at the total capacitance during the depletion mode of operation. So depletion mode of operation पे मेरा total capacitance क्या होंगे? So now you can see that in the depletion mode of operation there are two types of capacitance that is existing right now. That is the oxide capacitance. एक तो होगा ये oxide layer के लिए capacitance आएंगे और यहाँ पे जो negative charges accumulate हुआ है, that means यहाँ पे जो depletion layer create हुआ है, एक depletion layer के लिए capacitance आएगा. So then that means right now what we can say, we can relate the parallel plate capacitor like this. So this is one plate, इसके अंदर oxide है, ये मेरा oxide layer, this is the oxide layer that we are talking about. इसके बाद यहाँ पे negative charges का एक layer है, negative charges का layer, that is the depletion layer. और इसके बाद और एक metal plate है और यहाँ पे connected है. So you can see that the total dielectric right now it has two parts now. One is oxide, one is the depletion layer. That means we will get series combination of oxide capacitance, and the depletion layer capacitance. डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस और ऑक्साइड कैपेसिटेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे आएंगे. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट 1/c डैश मतलब पर यूनिट एरिया. सो 1/c डैश इन द डिप्लीशन रीजन. सो डिप्लीशन रीजन के अंदर मेरा कैपेसिटेंस को अगर मैं c डिप्लीशन बोलता हूँ, सो 1/c डिप्लीशन विल बी इक्वल्स टू 1/c ऑक्साइड plus 1/c capital D मतलब
capacitance due to the depletion region. So this is the capacitance. This is the capacitance per area due to depletion due to depletion region, and this is the capacitance due to the oxide. So in this way we can get the total capacitance inside the MOS capacitor in the depletion mode. So now if we want to find the value of total capacitance, that is the C dash depletion, it can be written as COX into C capital D dash divided by COX plus C capital D dash. So after further calculation, we can say that C dash depletion can be written as COX divided by 1 plus COX divided by CD depletion. We can write in this way also. So now what will be the value of COX? COX का value क्या होता है? Epsilon OX divided by TOX because per unit area. Similarly यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ COX मतलब Epsilon OX divided by TOX divided by Epsilon S, that is the permittivity of the semiconductor, divided by XD. XD is the width of the depletion layer. So in this way we can find, so after calculating this we can write that C dash, that is the total depletion mode capacitance, can be written as epsilon OX divided by, it will be TOX plus, और क्या आएंगे इसके साथ एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन OX आएगा, उसके साथ एप्सिलॉन S आएंगे, उसके साथ आपका XD भी आएंगे. So in this way we can find the total capacitance in the depletion mode of operation. So we can see as we increase the VG voltage, तो मेरा XD तो increase करता है up to threshold voltage. So in this way we are increasing the VG, XD is increasing, so XD part will increase, so C depletion will decrease. So we can say C dash depletion will decrease. That means if we want to plot like this कि in the accumulation mode पे क्या हुआ था, accumulation mode पे मैंने गेट वोल्टेज को नेगेटिव डाला था. So let us assume we are plotting the capacitance in the capacitance per unit area on the y-axis, and in the x-axis we are giving the VG voltage. So when the VG was negative, the capacitor was in the accumulation mode, and in that case the capacitance value was like this. The capacitance value was fixed, that is the COX. So COX was the capacitance value in the accumulation mode. So in the accumulation mode पे मेरा capacitance value था COX. So now when the gate voltage has been given a positive value, it has entered, the capacitor will enter into a MOS capacitor will enter into depletion mode. So depletion mode ऑपरेशन चालू हो जाता है, और depletion mode ऑपरेशन में capacitance का value होता है ये. So VG is increasing beyond, so this is the zero voltage. So zero voltage के बाद मेरा हो जाएगा depletion mode of operation, और depletion mode of operation में जब मेरा VG गेट voltage increase करते हैं तो मेरा capacitance value decrease करते जाते हैं. So the capacitance value will decrease like this. So when this capacitance value is decreasing because the VG is increasing, so VG increase होते होते क्या होगा, ये VG थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आएंगे. जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आएगा मेरा जो XD होंगे, इट विल टेक अ XD मैक्स वैल्यू. तो जैसे ही XD मैक्स होगा मेरा जो C डिप्लीशन है, इट विल बिकम C डिप्लीशन मिनिमम वैल्यू.
So now when the VG voltage becomes the threshold voltage के साथ सेम हो जाता है, then the capacitance value will be the minimum value. So the capacitance value will be minimum at the threshold. So we can say like this. So at the threshold voltage it will become a minimum value. So we can say this value is C minimum. So this is the minimum value of the capacitance that is offered by the MOS capacitor. Now we'll go for the threshold voltage. तो threshold inversion point पे मेरा capacitance का value minimum होता है. मैंने अभी अभी देखा कि at the threshold inversion point so C minimum होता है. तो what will be the equation for C minimum? So the equation for C dash depletion minimum value, the equation can be written as epsilon OX और यहाँ पे आ जाएगा आपका TOX plus epsilon OX divided by epsilon S into XD max. So this will give the value of minimum capacitance offered by the MOS capacitor. Now let us move to the inversion operating point. So if we move to the inversion operating point, so the third operating region will be inversion operating mode. So what will happen in the inversion operating mode? So inversion operating mode में क्या होता है कि after the threshold value when the gate voltage is greater than the threshold value, so उसके बाद मेरा inversion चालू होता है. So in the inversion mode of operation में मेरा जो if we draw the schematic of a MOS capacitor, it will look like this. So this is the body terminal और ये वाला टर्मिनल मेरा गेट है और यहाँ पे मेरा मेटल लेयर, यहाँ पे ऑक्साइड लेयर. So this is metal, this is oxide, this is semiconductor and we have taken p-type semiconductor. Now in the inversion mode what happens, ये जो XD वैल्यू होता है डिप्लीशन लेयर, सो यहाँ पे मेरा डिप्लीशन लेयर आता है, that is the space charge region in this way, negative space charge region. So this is the negative space charge region that will occur and the width of the depletion layer will be maximum, XD max. Now ये जो VG वोल्टेज था, that VG वोल्टेज जो थे, ये वाला VG वोल्टेज अभी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो मैं अगर VG वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो ये XD का वैल्यू मतलब विद ऑफ द डिप्लीशन लेयर और इंक्रीज नहीं होगा, बट इसके अंदर चार्ज कंटेंट और चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे. चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे. चार्ज डेंसिटी कहाँ से इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते जाएंगे. दैट मीन्स इन्वर्शन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस layer, inversion layer of electrons. So now what will happen if we draw the charge content. So ये मेरा metal, ये oxide, ये semiconductor. So if we draw the charge content, what will be the charge content right now? So पहले क्या होता था, मेरा जो डिप्लीशन रीजियन के अंदर जो चार्जेस थे, ये वाला चार्ज था और यहाँ पे मेटल के ऊपर कुछ चार्ज होंगे, ये मेरा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस. सो नाउ if we increase this Vg by small amount, so there will be a small change in the charges. So यहाँ पे मेरा एक small change होगा, so it will give the small change. So यहाँ पे अभी increase नहीं होंगे width जो है fix रहेगा, ये वाला width मेरा fix रहेंगे, but there will be a density change, there will be density charge content यहाँ पे थोड़ा सा change होगा. So you can see that यहाँ पे मेरा माइनस क्यू डैश है, यहाँ पे मेरा प्लस क्यू डैश है और ये डी क्यू चेंज हुआ है डी क्यू डैश और यहाँ पे चेंज हुआ है माइनस डी क्यू डैश. सो इन दिस वे कैपेसिटेंस विल आल्सो डेवलप, बट यू कैन सी दैट यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर है,
So an incremental change in the voltage across the MOS capacitor will change in the inversion charge layer density. So inversion charge layer के density में काम आएंगे, but the width of the depletion layer change नहीं होगा. So the capacitance is only due to the oxide capacitance right now. So we can say the capacitance in the inversion layer will be only due to the oxide capacitance, क्योंकि यहाँ पे XD max चेंज नहीं हो रहा है. अगर चेंज नहीं होंगे तो कैसे कैपेसिटेंस वैल्यू डेवलप करेगा. सो चेंज कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज इन द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वोल्टेज. सो यहाँ पे तो इंक्रीमेंटल चार्ज कंटेंट चेंज हो रहा है सिर्फ ये वाला. So oxide capacitance ही काम आएंगे. So we can say that the inversion capacitor per unit area will be only the oxide capacitance. That means right now what we can say, if we want to draw the CV characteristics, let us say, so in this axis we have plotted C, in this axis we have given VG. तो Vg का वैल्यू जब नेगेटिव था तब मेरा मॉस कैपेसिटर, दिस इज द सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मॉस कैप पी सबस्ट्रेट के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो मेरा जो मॉस कैप होंगे वो एक्यूमुलेशन मोड पे होगा जब Vg नेगेटिव होंगे. सो एक्यूमुलेशन मोड पे मेरा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है दैट इज COX and the capacitor will be in the MOS capacitor will be in the accumulation. Now Vg का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव कर देंगे तो मेरा डिप्लीशन मोड का कैपेसिटेंस धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा. सो व्हेन द Vg वोल्टेज विल बी VTH के जब सेम होगा तब मेरा ये मेरा डिप्लीशन लेयर है. सो दिस इज द डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन, दिस वन. So this is the depletion mode of operation. और डिप्लीशन मोड के बाद जब इन्वर्शन मोड पे आएंगे, सो इन्वर्शन मोड पे फिर से ये कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करेंगे और फिर से ये COX कैपेसिटर पे चल वैल्यू लेंगे. सो दिस इज द COX. सो दिस टोटल रीजन इज द इन्वर्शन रीजन. ये टोटल रीजन मेरा इन्वर्शन एंड दिस पार्ट is called the weak inversion and this part is called the strong inversion. So in this way we can divide the total CV character. So this is the CV characteristics for the MOS capacitor with P substrate. Similarly we can draw the MOS capacitor CV characteristics for the N substrate also. So if we want to draw that, so let us take that. So यहाँ पे मेरा Vg और यहाँ पे मेरा कैपेसिटेंस. So this is the Vg value. So now it is the Vg value or this is the capacitance value per unit area. So when the Vg is positive, so we are drawing the CV characteristics for N substrate MOS cap. So N substrate MOS cap के लिए मैं draw कर रहा हूँ. So in this way what will happen? So when the Vg is positive, the MOS cap will be in the accumulation. तो accumulation पे होंगे तो मेरा ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा वो COX होंगे. जैसे ही मेरा Vg वोल्टेज नेगेटिव हो जाता है वो डिप्लीशन लेयर में आता है, डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन. एंड इन डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन वी नो दैट द C value, that is the capacitance value, will decrease and it will attain a minimum value when the Vg voltage will be minus VTH. मतलब VTH, so VTH नेगेटिव होगा क्योंकि ये जीरो है. सो उसके बाद फिर से ये इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होते होते फिर से COX वैल्यू अटेन करेंगे. सो दिस रीजियन ऑफ ऑपरेशन, अगर रीजियन ऑफ ऑपरेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, so this will give the depletion region of operation and this will give the inversion region of operation. So in this way we can write the CV characteristics for the N substrate MOS capacitor also. But the important thing to note here,
that if any day in question, sometimes they ask that what will be the capacitance value at the flat band voltage. So in that case, what happens? The capacitance value. So if we want to find the capacitance of MOS capacitor at flat band voltage VFB, it can be written as C dash FB. It will look like this, that epsilon OX divided by TOX plus epsilon OX divided by epsilon S, or root over, it will come out KT by Q, और इसके अंदर आएंगे epsilon S by Na QNA. So this type of question can be asked. अभी तक आया नहीं है, मगर ये पूछ सकते हैं कि फ्लैट बैंड वोल्टेज पे आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट इट. So these are the detailed discussion about the CV characteristics of a MOS capacitor. In the end, do not forget to like and subscribe our channel to get more videos. Thank you.